Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. In today's lecture, we are going to read part 3 of the lesson The Champion at page number 13 in your class 10th English books. In previous lecture, we read that when both the friends were informed that they had to face each other in the final of National Boxing Championship, they were confused and sad. They were worried about their friendship and did not want their relationship to be affected by the fight. Each one wanted to win this fight because it was the most important event of their life. Today we will read that as the two climbed into the ring, the crowd exploded with a roar. Climb into the ring. Ring, a place where a boxing match takes place or occurs. Climb into the ring means अखाड़े पर चढ़े. As the two climbed into the ring, जैसे ये दोनों अखाड़े में चढ़े, the crowd exploded with a roar. Crowd, a large number of people. तमाशाई या हुजूम. Exploded with a roar means made a loud noise. तो तमाशाइयों की एक बहुत बड़ी शोर गूंज उठी. गुल एंड अली, जैसे ही दोनों अखाड़े में चढ़े, तमाशाइयों की शोर की एक बहुत बड़ी आवाज़ गूंज उठी. गुल एंड अली both bowed gracefully and then raised their arms in acknowledgement. Bowed means bent down, झुका. Gracefully means in a graceful way, दिलकशी के साथ बावकार अंदाज से. गुल और अली दोनों बावकार अंदाज से झुके and then raise their arms in acknowledgement. Acknowledgement means acceptance or appreciation. और फिर तमाशाइयों के दाद तहसीन के जवाब में अपने हाथों को हवा में बुलंद किया या उठाया. गुल turned slowly and his eyes met Ali. गुल आहिस्ता से मुड़ी और उसकी आंखें अली के आंखों के साथ मिली या टकराई. Suddenly, Ali's left eye winked and Gul responded. Wink means to shut one eye briefly as a signal. झपकना. Suddenly, Ali's left eye winked and Gul responded. Responded means to say something and reply. अचानक अली की बाई आंख झपकी और गुल ने भी वैसे ही जवाब दिया. उसने भी he also winked his left eye in response या in reply. Bong bong bong. Bong घंटी की आवाज़. The roar turned to stillness. Stillness means silence. शोर खामोशी में बदल गया. Ladies and gentlemen, the announcer spoke slowly. Announcer, one who announces. Ladies and gentlemen is a phrase used to address a crowd or audience consisting of men and women. Ladies and gentlemen means ख़वातीन व हज़रात. The announcer spoke slowly. ऐलान करने वाले ने आहिस्ता से कहा, ख़वातीन व हज़रात, now the moment we have all been waiting for. अब वो लम्हा जिसका हम सब इंतज़ार करते रहे हैं. The main event, वो बड़ा मुकाबला between two fine young fighters, दो बेहतरीन नौजवान fighters लड़ने वालों के दरमियान. In this corner, weighing 133 pound, अहमद अली. इस कोने में weighing 133 pounds is equal to 57 kg. 131 पाउंड वज़नी. इस कोने में 131 पाउंड वज़नी अहमद अली. एंड इन दिस कॉर्नर weighing 133 पाउंड गुलशेर खान. और इस कोने में 133 पाउंड वज़नी गुलशेर खान है जो 59 kg बनती है. The winner will represent Pakistan in World Boxing Championship in the lightweight category. जीतने वाला आलमी बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के lightweight a weight in boxing ranges from 57 to 60. जीतने वाला आलमी बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के
لائٹ ویٹ کیٹیگری میں پاکستان کی نمائندگی کرے گا. There will be no draw. اس میں برابر کا مقابلہ نہیں ہوگا. One of them must win the match. May the best man win. اللہ کرے بہتر کھیلنے والا یا بہتر کھلاڑی جیتے. بونگ بونگ راؤنڈ 1. پہلی مرحلے کی گھنٹی بجی. Ali and Gul turned and faced each other squarely in a fighting pose. Squarely means directly, سیدھا. Fighting pose means style, لڑنے یا کھیلنے کے انداز میں. علی اور گل ٹرن مڑے اینڈ فیس ایچ ادر اور ایک دوسرے کے سامنے آئے. اسکوئرلی سیدھا. ان اے فائٹنگ پوز لڑنے کے انداز میں مقابلے کے انداز میں. علی اور گلشیر مڑے اور لڑنے کے انداز میں یا کھیلنے کے انداز میں سیدھا ایک دوسرے کے سامنے آئے. علی ویسٹڈ نو ٹائم. علی نے وقت ضائع نہیں کیا. ہی کیم ان فاسٹ ہیڈ لو half hunched toward his right shoulder. He came in fast. وہ تیزی سے آئے. Head low سر جھکائے. Half hunched. Hunch means lean forward with raised shoulder. آگے کندھے اٹھا کر آگے کی طرف آئے. He came in fast head low half hunched toward his right shoulder. وہ اس کی دائیں کاندھے کی طرف سر جھکائے اور کاندھوں کو تھوڑا سا آگے کی طرف اٹھائے ہوئے تیزی کے ساتھ آئے. اینڈ لیش آؤٹ ود اے اسٹریٹ لیفٹ. لیش آؤٹ مینس ٹو اٹیک سڈنلی, اچانک حملہ آور ہونا. لیش آؤٹ ود اے اسٹریٹ لیفٹ. اور بائیں ہاتھ کے سیدھی مکے کے ساتھ حملہ آور ہوئے. He missed a right cross. Cross is a straight punch with your right hand. He missed a right cross. اس نے دائیں ہاتھ کے سیدھی مکے کو ضائع کیا. یا he missed a right cross at اس کے دائیں ہاتھ کا سیدھا مکہ خطا چلا گیا یا نشانے پر نہیں لگا, ضائع ہو گیا. And as Gul slipped the punch and counter with 1, 2, 3 lefts and slapped Ali's head back. جیسے ہی گل نے اپنے آپ کو اس مکے سے بچایا, اس کے مکے سے بچایا. and counter with 1, 2, 3 left that snapped Ali's head back. اور جواب میں اپنے بائیں ہاتھ سے 3 مکے مارے. that snapped Ali's head back جو سیدھا علی کے سر میں لگے. sending a mild shock coursing through him. shock means an unpleasant experience. An unpleasant experience. Unpleasant means صدمہ. shock means صدمہ. جیسے ہی گل نے اپنے آپ کو اس کے پنچ سے بچایا. انکاؤنٹر with 1, 2, 3 لیفٹ اور اپنے بائیں ہاتھ کے مکوں سے 3 جوابی حملے کے. and that snapped وار کی. and that snapped Ali's head back جو سیدھا علی کے سر میں لگے. sending a mild shock coursing through him اور اس کے پورے جسم میں, جس کی وجہ سے اس کے پورے جسم میں اس کے پورے جسم میں ہلکی صدمے کی لہر دوڑی. mild shock means ہلکا صدمہ. if Ali had any small doubt about their friendship affecting their right. اگر علی کے ذہن میں ان کی دوستی کا ان کی لڑائی پر یا مقابلے پر اثر انداز ہونے کے بارے میں تھوڑا سا بھی شک تھا. it was completely dispelled. dispelled means make something disappear, make a doubt, feeling etc. disappear. it was completely dispelled تو وہ مکمل طور پر ختم ہو گیا. Gul's left hand was like a piston pumping jabs, one right after another with seeming ease. A piston is a mechanical device
a mechanical device with plunging and thrusting movements. Piston pumping is used for piston pump is used for moving liquid or compressing gases. Gul's left hand was like a piston pumping. गुल का बायां हाथ एक piston pumping की तरह था. Jabs one after another with seeming ease. Jab means a quick sharp blow with a fist. जोरदार मौका, तेज जोरदार मौका. गुल का बायां हाथ एक पिस्टन की तरह था. Jabs one right after another with seeming ease. जो निहायत आसानी के साथ या जो निहायत आसानी से या जो बहुत आसानी के साथ एक के बाद दिगरे या एक के बाद दूसरी या मुसलसल मुक्के बरसा रहा था. गुल का बायां हाथ एक पिस्टन पंपिंग की तरह था जो बहुत आसानी से मुसलसल मुक्के बरसा रहा था. Ali bobbed and weaved and threw occasional punches with his right. Bobbed and weave means move quickly up and down and from side to side. ऊपर नीचे और दाएं बाएं हरकत करना. Occasional means वक्तन फवक्तन. Punches means मुक्के with his right अपने दाएं हाथ से. Ali bobbed and weaved ऊपर नीचे और दाएं बाएं हरकत करता रहा and threw occasional punches with his right. अली ने ऊपर नीचे और दाएं बाएं हरकत की और अपने दाएं हाथ से वक्तन फवक्तन मुक्के बरसाए. He ducked a short right and missed a left hook. Duck means to lower down head or body suddenly. Duck means झुक जाना, थोड़ा सा झुकना. He ducked a short right. वह दाएं हाथ के एक मुख्तसर मुक्के से झुके and missed a left hook और बाएं हाथ के मुक्के से को ज़ाया किया या बाएं हाथ की ज़रत से खुद को बचाया. Ali trapped him against the rope just long enough. अली ने उसको काफ़ी देर तक रस्सियों के साथ पंसाया. ट्रैप मीन्स पंसाना, उलझाना. रस्सियों के साथ उलझाया. ट्रैप अगेंस्ट रूप्स रस्सियों के साथ उलझाना या पंसाना. अली ने उसको रस्सियों के साथ काफ़ी देर तक उलझाए रखा. टू पावर सम पनिशिंग राइट्स एंड लेफ्ट्स टू गुल हार्ट मिड सेक्शन. मिड सेक्शन मीन्स मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी. हार्ट मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी, chest etc. And to power some punishing right ताकि right and left ताकि उसके जिस्म के दरमियानी सख्त हिस्से पर दाएं और बाएं हाथ के मुक्के बरसा दें. उसके जिस्म के सख्त हिस्से पर अपने दाएं और बाएं हाथ के ज़ोरदार मुक्के बरसाने के लिए उसने अली को रस्सियों के साथ काफ़ी देर तक उलझाए रखा. बॉम्ब राउंड 1 came to conclusion. घंटी बजते ही पहला मरहला इख्तिताम पजीर हुआ या मुकम्मल हुआ. come to conclusion means completed at the end point and be finished. पूरा होना मुकम्मल होना. Dear student, read today's lesson or revise today's lesson again and again so that you may learn it well, and also write down all the difficult words with their meaning in your notebook and make sentences of your own. Allah Hafiz.